Today's trek is a gradual climb for an hour, offering a pretty campsite by the stream. The campsite is an open grassland filled with colorful flowers from yellow to lavender to pink to purple. तीनों टेंट लाइन से कर देना। लाइन चलिए ओए 1 2 3 अच्छा बीच में टर्फ बीच में ग्राउंड। अच्छा समझ गया मैं। 2 1 बीच में टॉप। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Finding the pass is the most important task on our hands. None of us have been here before, so it's important to find the exact route to the pass so we could trek tomorrow without worrying about the trail. We discussed further route to pass and checked the map, and around 11 AM we left for locating the route to pass. क्या प्लान फिर? 1 2 3 ये 3 जो पोल दिख रहे हैं ना आपको, हाँ इनको देखो आप लगेगा तो आपको पास का, ठीक है? ओके इस वाली गली में गॉट इट द राइट साइड। हाँ राइट में। हाँ हाँ तुम और चिक्की जाओ इस तरफ को, मैं बिजू और नोनू वो वाले पास पे अटेम्प्ट करते हैं। वॉकी टॉकी ऑन रखते हैं, बात करते रहेंगे जैसा भी रहा। We'll keep communicating. The route is to follow the snow stretch till the lowest point on the front ridge. A few switchbacks along the snow will get us to the moraine section, and another short hike over the moraine and its creek get us towards the pass. Yeah, let's go. Currently अभी हम थोड़ा रूट रेकी कर रहे हैं फॉर टुमारो, क्योंकि रूट के बारे में ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं है। थोड़ा सा मोरेन सेक्शन बाकी है। Now, I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake. And if you see this entire ridge line, the lowest depression point seems to be this 30 degree, 40 degree. क्या बोलते हैं नरेश? 45 डिग्री स्लोप। चेहरे पे स्माइल देख के पता चल गया होगा पास पे पहुंच गए। वी स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम देयर, ट्रैवर्स दिस होल स्नो पैच, लास्ट का 20 मिनट स्टीप सेक्शन एंड वी मेड इट टू द पास। सिग्नल आ गया भैया। अभी हमारा प्लान है स्प्रिंट करते हुए आधे घंटे में कैंप पहुंचना। ओके, नरेश हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। कम ऑन बिजू, स्टार्ट। एंड हियर आई स्टार्ट। Run. Oh. Run. ओ ये लहसुन वाला पौधा खा। देश भैया ने हमारे लिए भी चाय बनाई और टुडे वी आर गोना क्रॉस द पास। आई होप सब बच ही जाए, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। खैर Today's trek is going to be long and hectic. We started early and make our way to the pass, leaving behind the beautiful campsite of Goru Thach.
first few steps on the snow would be difficult as you are trying to find balance, but once you gain confidence to walk on the snow, you leisurely enjoy the snow walk. The trail gives us the great close-up view of the Otibba peak. The altitude gain is quite considerable, which adds to our thrill. कितना रह गया पुष्कर भैया? 1 घंटे, 1.25 घंटे और That's it. The lowest point on the ridge. That one, the lowest point on this ridge, that is the Guru Pass. The terrain is initially gradual but gives way to moraine, snow and some icy sections. The last 100 meters are really steep and you need to do 2.2 climb without slipping away. This is most important while we are doing steep section. Bhai Sherpa almost reached. Yeah, Bhai Sherpa, congratulations. Give me a high five. Congrats, Ramuji. अभी हम ऊपर पहुंच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। Done with the pass. I guess कितने घंटे लगे पास से नीचे को हमें? Total 6 hours. मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि इनके पास ये कार्ड है और मैंने ये चलना है? 2 नाइटर बस. That's it. भाइयों कल कुछ भी हो मैं पहुंचूंगा घर गारंटी के साथ.